Hi guys, let's start with our first video that is on Python. So what is Python? So Python is a programming language that is used to create software and a program, and it is specially used in the field of data science. So what we can do with Python? We can analyze the data, we can create graph, chart, and even build a simple machine learning models to predict the outcomes. So question arises, why Python is a good choice for the beginners? Because it has a simple and easy to learn syntax that is designed to be readable and resemble the English language. जो Python language का syntax है ना, वो बिल्कुल resemble करता है जो हमारी English language है. Like हम अपनी बुक में से कोई इंग्लिश वर्ड पढ़ रहे हैं या कोई इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पाइथन सिंटैक्स सिमिलर वैसा ही है जैसे हम कोई इंग्लिश का वर्ड पढ़ रहे हो. सो दैट्स व्हाई इट मेक इजी फॉर द बिगिनर टू राइट कोड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन देयर कोड. Now, other features क्या है पाइथन की? Python has a vast areas of libraries and tools that are specially designed for data science, and these libraries are essential for data manipulation, visualization and machine learning tasks. और सबसे अच्छी फीचर जो पाइथन की है वो है इट इज अ लार्ज ओपन सोर्स कम्युनिटी. व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज ओपन सोर्स कम्युनिटी है? इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. ये एक ऐसी लैंग्वेज है पाइथन जिसकी सारी लाइब्रेरीज, जिसके सारे टूल्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है किसी भी प्लेटफॉर्म पे. इसके सारे सपोर्ट, सारे ट्यूटोरियल, सारे डॉक्यूमेंटेशन और any method we want to use, all are available free of cost in any platform. So that's why it is easier for beginner to learn and use Python for the data science task. Okay, now Python is also a flexible language. Why? Because it is used for wide range of data science tasks and it can handle large data set. So overall हम यहाँ पे ये कह सकते हैं because of Python simplicity and it provide vast arrays of libraries and it also a open source community, and because of its flexibility it makes an excellent choice for beginners in the field of data science. So any beginner should learn this language, that is Python programming language. Now let's see which platform we are using for the Python. So that is IDE. Now what is IDE? IDE is not any platform. Okay, so IDE is integrated development environment. So it is a software application that provide programmer with the set of tools and feature to write, debug and test their code in their single interface. तो IDE क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जहाँ पे हम अपने कोड को राइट कर सकते हैं, देन डिबग कर सकते हैं और अपने कोड को रन कर सकते हैं. तो IDE हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? इट ऑल्सो इंक्लूड टेक्स्ट एडिटर, debugger, compiler and other feature like autocomplete, syntax highlighting and code formatting. अब कुछ IDE ऐसे हैं जो सिर्फ हमें कोडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लाइक विजुअल स्टूडियो, जहाँ पे हम अपने कोड को सिर्फ राइट कर सकते हैं और देन डिबग कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं एंड देन इट विल गिव अस आउटपुट. अब नाउ कुछ IDE ऐसे भी अवेलेबल है जो हमें टेक्स्ट एडिटर with coding facilities provide करते हैं. Now what do you mean by text editor है? Text editor like वो हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम अपने कोड के बारे में लिख सकते हैं या नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं या कुछ लाइंस लिख सकते हैं. लाइक आई एम यूजिंग हियर गूगल कोलैबोरेटिव, दैट इज ऑल्सो IDE platform. It provide a facilities of text editor with the coding facilities. So let's see what is Google Collaborative and what are the features of this IDE. So it is a web-based platform that does not require any installation. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. You can only go to Google
and write Google Colab. You will see a Google Colab and you can use it. Only you require an internet connection, and it offers a free environment for user to run and execute code. Okay, it does not require any software, it does not require any installation, it does not require any hardware. Okay, now, and it allow for collaborative work and sharing of code and notebook. It is the main feature of this collaboratory, that it provides a text editor. We can write our notes side by side, we can do coding, we can give examples of coding, and then we can save it and we can share it to our friends or our WhatsApp, anything, and we can also save this to our drive. Okay, so it make easy for beginner to work with it and get feedback on their work. And also it come with pre-installed libraries and tools, and which is commonly used for data science like NumPy, Pandas, etc. So it easy for beginner to start working on their project without having to worry about setting up their environment. I think Google Collaboratory is the best platform. If you are beginner for Python programming, you should go on Google and see what is Google Collaboratory and see some features of Google Colab, and then we will continue in next videos. Thank you.